Those who have joined me right now, a very good morning to everybody. सारे बच्चों को very good morning. सनी डे है, पूरा फायदा उठाइए, धूप में बैठिए, लर्न कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको जो घर में मिलने का रहने का मौका मिला है ना, टेक इट्स एडवांटेज, फुल एडवांटेज लो इसका। खेलने के लिए नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि यू हैव गॉट द फुल टाइम टू बी एट होम, टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एट होम, टू रिवाइज एट होम। आप अपने अनुसार, अपने जगह के अनुसार, मन किया धूप में बैठ गए, बट ट्राई टू गिव टाइम टू योर सब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। मेक अ रूटीन ऑफ योर्स। अपना एक रूटीन बनाए कि मुझे 1 घंटे साइंस को देने हैं, हमें आज मैथ्स और इंग्लिश का लेना है, आज हमें साइंस और एसएसटी का लेना है। आप देखेंगे इट विल नॉट बी अ बर्डन। अगर आप हर चीज कल पे डालेंगे ना कि अच्छा मैंने आज ये कर लिया, बाकी कल हम काम हम कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता। और बच्चे, द टाइम इज पासिंग। आज 31 है। हमने नए साल के लिए वेट कर रहे थे हम लोग, और नए साल का हम 1 महीना गुजार लिए। आप सोचिए कितनी जल्दी टाइम फ्लाई किया। हम 25 दिसंबर जब हम क्लासेस स्कूल में थे, 24 को, तो हम नए साल के लिए वेट कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर न्यू ईयर कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इट इज गोइंग टू बी आवर रेजोल्यूशन। एंड थिंक ऑफ इट, टुडे वी आर ऑन द 31st of January. वी हैव पास्ट 1 month of this new year. अब ये न्यू ईयर न्यू नहीं है। अब ये हमने इनके 30 दिन गुजार लिए, और आपके पास नाउ वी हैव गॉट ओनली 28 days फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन टू बिगिन। ठीक है, तो अभी भी आपके पास सिलेबस अवेलेबल है नाउ। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज सिंस यू आर नॉट इन द स्कूल। तो आपके जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी क्या कहें उसे, प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको लगता है कि मैम ये हमारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ, यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू बी एट होम। आप चुने, देखें जहां कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू गिव अ कॉल टू द टीचर्स, व्हाट्सएप में लिख के भेजे। ड्यूरिंग द क्लास यू डिस्कस कि मैम हमें ये समझ नहीं आया था, क्योंकि इसके बाद यू विल नॉट बी हैविंग टाइम, है ना। तो आज से मेक इट अ प्रॉमिस कि ये 28 days जो भी हमारे पास है, हम इनका एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। अभी ये 1 महीने के लिए खेलना बंद करें सारे बच्चे, एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन 6। आप 6 में हो जाएंगे। डे बाय डे यू आर ग्रोइंग अप, तो योर टेम्परामेंट शुड बी लाइक दैट ओनली। अब आप क्लास 1 2 3 4 के बच्चे नहीं है, यू आर गोइंग टू बी अ 6 के स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक अ रूटीन ऑफ योर्स। सारे बच्चे एक रूटीन बनाए। मैं एवरीडे क्लास का पहला 5 से 6 मिनट आप लोग को ये बताने में देती हूँ, जस्ट टू मेक यू श्योर कि अभी आपके पास समय बहुत कम है ना। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। आपके जो भी 5 लेसन्स 6 लेसन्स जो भी सब्जेक्ट वाइज है, उसको डिवाइड करो कि हमें ये कर लेना है। ओके, सो टुडे विल डू द रिवीजन ऑफ प्लांट्स अगेन। आज हम लेसन 2 का रिवीजन फिर से करने वाले हैं। 1 2 हम पूरा फिनिश करेंगे, देन वी विल मूव टू कंपोजिशन ऑफ एयर, फ्यूल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्यूल और कंपोजिशन ऑफ एयर का बहुत सारा रिवीजन कर लिया। आज अगेन विल डू द रिवीजन ऑफ लेसन 2। ठीक है, लेसन 2 का रिवीजन करने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि ऑल ऑफ यू हैव लर्न द क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, वंशिका ने हाथ उठाया। वंशिका, टेल मी व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू रेज योर हैंड? Ma'am, I wanted to ask that you have sent the assignment on Saturday also. No, I couldn't send. Sorry, Bacha. I sent for only class 4, and there were many students. I was doing the correction, so I had not sent you any assignment for. I had not sent you assignment in the assignment section. Okay. हमने आपको फ्राइडे को दिया था, जो आपको सैटरडे को मैंने चेक करने के लिए कहा था। इनर व्यू ऑफ आई, डायग्राम ऑफ इनर व्यू ऑफ आई, है ना। वंशिका, आपने म्यूट भी कर लिया। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, मुझे बताया तक नहीं। वंशिका, अनम्यूट करो। मैम, हाँ जी मैम, मेरे बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रही है। ओके। तो मैंने आपको फ्राइडे को दिया था, ड्रॉ द इनर व्यू ऑफ आई, है ना। तो वो यू आर सपोज टू सेंड टू मी, जिसमें मैंने बहुतों को देखा है। आई हैड गिवन यू रिमार्क्स आल्सो। ओके, चलो, टुडे विल डू द रिवीजन ऑफ लेसन 2 प्लांट्स। इस लेसन में हम लोगों ने क्या करना था? वी हैड स्टडीड अबाउट द reproduction in plants,
We had studied about the germination of seeds. We had studied about the dispersal, types of dispersal of seeds. कैसे seed जब disperse करते हैं, isn't it? Again, Utsav raised his hand. हाँ उत्सव बोलो क्या हुआ? मैम आपने मेरे को रिमार्क्स नहीं दिया मैम। ओके हाँ मैंने आपका रिमार्क्स नहीं दिया, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, मैंने नहीं दिया है, मैंने रिमार्क्स आप वाले में नहीं, मुझे याद है मैंने आपका रिमार्क्स नहीं दिया। चलो मैं आज आपको रिमार्क्स दे देती हूँ, ठीक है? ओके चलो ठीक है। So in this lesson we had studied about the reproduction in plants, ठीक है? Plants plants reproduce through its seed, we all know this, है ना? हम कैसे plants में reproduction कैसे होता है? Through its seed. अगर किस plant में reproduction seed ना हो तो कैसे reproduction होता है? Through its vegetative. through vegetative reproduction. So its vegetative part, मतलब the other parts of the plant, and we call those type of reproduction vegetative reproduction. Akshat, good morning बेटा, अभी भी yawn कर रहे हो? Yeah, like this. नींद आ गई? मम्मा ने जल्दी उठाया है क्या? No ma'am. तू बताओ। मैम रात को देर से सोया था मैम। कितना काम मम्मा करवाती है, रात को कुछ काम वाम रख दे दी होगी, है ना? No, उसे ma'am. तो नो मैम, और मैम या तो ओवरलोड होता होगा स्कूल से, या पढ़ रहे होंगे। मैम ऐसा तो देख रहा था। अरे वाह, देखो हमारे नौनिहाल ये लोग हैं, they were watching the movies, है ना अक्षर? Very good. चलो ओके, so what is the vegetative reproduction? मुझे कौन बताएगा what is vegetative reproduction? Raise your hand. Bhumi Singh, Satyam Singh, Kartik Sana, Anusha, Aman, Ridhima, Shambhavi, Vanshika, Akarshan. Okay, let's begin with Akarshan because बहुत दिन के बाद आया है, देखो कितना याद किया। Akarshan, what do you mean by vegetative reproduction? Unmute yourself. मैम सोचा क्या कि मैम तो पूछेंगी नहीं, चलो हाथ ही उठा लेते हैं। नो मैम याद तभी भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी याद होगा और जैसे ही पूछा भूल गए? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। चलो जल्दी बोलो, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? बहस नहीं। मोहित रंजन, गिव दिस आंसर। मोहित बोलो। मैम, this help the farmer to planting plant without seed, and this also help in planting a new plant without in short period. Simple question was that. What is vegetative reproduction? I didn't ask why is it important and why we go for vegetative reproduction. Simple question was, what is vegetative reproduction? मोहित, फिर से सोचो क्या होना चाहिए आंसर। मैंने शुरुआत में इसकी आंसर दी थी। Planting plant. I had given the answer in the very beginning of the class. Aditya Naman, you are unmuted. You can give the answer. Reproduction by vegetative reproduction is a reproduction in which plant cuttings, stems, and roots are used. Vegetative reproduction is the reproduction in plants in which the vegetative part is involved. There is no seed. Or we can say reproduction in plants without seed is called vegetative reproduction. है कि नहीं? ये वो reproduction है जिसमें seed involved नहीं होता। अगर seed नहीं involved होता तो फिर क्या involved होता है? Rajkumar, give this answer. Unmute yourself, Rajkumar. Bolo. Yes, ma'am. If seed is not involved into it, then how does it
how does the reproduction take place? Rajkumar, his video is not coming. Underground cell Bandwidth is and low. stem cutting. Your video is not coming, beta. Your video is not coming. The screen is complete black. Akanksha Verma, give this answer. How does vegetative reproduction take place? Akanksha. Rajkumar, your bandwidth is very low. That is why your video is not coming. Akanksha, answer do. बोलो. Unmuted है आप? Give the answer. हो गया? मतलब बैठ करके भी 5-6 मिनट तो क्रॉस हो ही गया होगा. Then also you're sitting. Akanksha, am I asking you something? कुछ बच्चों को मैं अब क्लास से रिमूव करना शुरू करूंगी. अगर आपको जवाब नहीं देना है तो एटलीस्ट यू कैन से दैट मैम आई डोंट नो द आंसर, और मैम प्लीज पास द क्वेश्चन टू समबडी एल्स, आई विल लर्न इट टुमारो. बट क्लास में म्यूट कर देना अपने आप को बार बार, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. Vivek Kumar, give this answer. Vivek, first you open your video. Open your video first. I'll not be asking. Ashwini Sharma, bol. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Reproduction through different parts of the plant, like underground stem, a stem cutting, underground roots, leaves. And how is it useful? How is it useful? It is useful because it is Or make it like this. The question can be like this. What is its importance? State its importance. State the importance of vegetative reproduction. vegetative reproduction is this helps in reproduce for farmers. It is an easier and faster method of growing a plant. Okay. The vegetative reproduction is very important for because it is easier and the faster method of reproducing same plant or same breed in a very short period of time. And secondly, it is very useful for the farmers because एक साथ वो बहुत सारे पौधों को लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट का reproduction कर सकते हैं. Shambhavi, is Ashwini and me right? Are we right in giving the answer? Importance of vegetative reproduction. Yes, ma'am. Can I get the answer from you ma'am. also? Can I get the same answer Yes, from ma'am. you? Bolo. Yes, ma'am. It helps farmer to grow plant without seed. It is faster method to plant a seed. It will help the farmers to grow the crop or the plants, and it is the easiest and the fastest method of increasing same number of plants within a short period of time. Okay, right. Next, what are the conditions? It will be Ridhima. Ridhima, unmute yourself. What are the conditions required for germination of seed? Ridhima, unmute karo. Yes, ma'am. The conditions are temperature, water, and sunlight. Sunlight. Can be, but in other words, we call it warmth. है ना? Conditions required for germination of seed is air, water, and warmth. Akarshan, Okay. तुमने question को जवाब नहीं दिया, तो again a question for you. Yes, ma'am. The question is, if a seed
is okay, seed do not germinate when they are kept in ice box or refrigerator. Why? Ma'am, can you repeat the question again? I was not giving the answer. I was giving the question only. सारे हेड Ma'am, क्लियर कट कान में है, उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन को कम से कम आकर्षण को 3 बार सुनना है. Seeds do not germinate when they are kept in the ice box or refrigerator. Why? because they do not get the proper warmth and proper warmth and at temperature. Okay. I want the same answer from Bhumi Singh. Bhumi? Unmute Yes, yourself. ma'am. Give the answer. Again. Seeds do not germinate when they are kept in an icebox and or refrigerator, because in icebox and refrigerator they do not get the right temperature and warmth. Okay. भूमि वैसे नहीं करो, वो छोटा है. देखो देखो वो कुछ और कर रहा है. तुम्हारे मोबाइल के साथ छिड़कानी कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट मतलब उसे लिटरली भगा रही हो वहां से, है ना? No, ma'am, वो खुद भाग गया. ओके सुनो, अब आकर्षण, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं बता रही हूँ, आप एक चीज का ध्यान रखो, वी नेवर बिगिन एनी सेंटेंस विथ बिकॉज, है ना? बिकॉज से हम कोई सेंटेंस शुरू नहीं करते. और आकर्षण, ये आपकी हैबिट है, आप हर कोई सेंटेंस को, हर आंसर को बिकॉज से शुरू करते हैं. आपकी कॉपी में भी ऐसे ही होता है और आप बोलते वक्त भी ऐसे करते हैं. नहीं बेटा, मेक इट अ प्रैक्टिस. यू शुड नेवर स्टार्ट एनी सेंटेंस विद बिकॉज. क्योंकि ऐसा हुआ, अरे क्यों क्यों क्यों, यू आर लीविंग द रेस्ट पोर्शन. तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू use the conjunctions in the between only. Okay, ठीक है आकर्षण? Okay, ma'am. So the question was, seeds do not germinate when they're kept in the ice box or refrigerator. Why they do not germinate? So the seeds do not germinate when they're kept in ice box because they are not getting the warmth or the temperature, what you said, right? तो क्या अगर warmth नहीं मिला तो क्या? So you have to complete it because this is one of the conditions required for germination of seed. Seed germination का ये एक important factor है, condition है. अगर इसे proper air नहीं मिलेगा तो वो germinate नहीं करेगा. अगर water और warmth मिला, air नहीं मिला तो germinate नहीं करेगा. water और air मिला, warmth नहीं मिला तो germinate नहीं करेगा. यहाँ पे हमने seed को कहाँ रखा है? फ्रिज में. हमने इसको एयर दिया है, हवा होगी अंदर, और इसको वाटर में डाला है, लेकिन फिर भी ये जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि उसको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं. हमने सीड को पानी में भी डाला और प्रेशर में डाल दिया, वार्मथ दिया, तो क्या नहीं दिया उसे? क्या कुछ ज्यादा दे दिया? हमने गर्मी ज्यादा दे दी. हमने अगर प्रेशर कुकर में डाल के उसको उबाल देना है तो क्या हो गया? अप्रोप्रिएट टेम्परेचर तो नहीं मिला ना, बशर्ते उसे क्या मिल गया? हाई टेम्परेचर, जिसमें ये बॉयल हो गया. Am I clear to everybody? Those who are looking at me like this, ऐसे आप करके देख रहे हैं. अश्विनी शर्मा making nodding his head like this, है ना? तो समझ में आ गई बात मैं क्या बोलना चाह रही थी? आकर्षण? Yes, ma'am. तुम ऐसे साधु महात्मा की तरह चुपचाप बैठ क्यों जाते हो ऐसे लाइक दिस? अब उसके बाद कोई जवाब नहीं देना है. पूछ रही हो, समझ में आ गई बात? चुप. हाँ जी मैम, फिर आप बोलते हैं कि बीच बीच में बोलते हो. अगर जब पूछ रही हूँ तब तो जवाब दो कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया. यस मैम. सही में ये कुछ ज्यादा ही म्यूट हो गया आजकल. ओके उत्सव, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. Yes, ma'am. Why do all seeds not germinate to form a new plant? Some seeds do not get favorable conditions to germinate and die. That's why
Some seeds may not germinate to form new plants. Some seed do not germinate to form a new plant because they might not have got the appropriate conditions required for germination. The appropriate conditions are air, water, warmth. तीनों में से कोई भी एक पूरा फुलफिल नहीं करेगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा. जैसे आइस बॉक्स में रख दिया तो क्या कर दिया, टेम्परेचर एकदम लो कर दिया. प्रेशर कुकर में डाल दिया तो क्या कर दिया, हाई कर दिया. बहुत बड़ा हाई कर हाँ, दिया. जरूरत से ज्यादा वार्म दे दिया तो बेचारा उबल गया उसके अंदर, तो क्या वो जर्मिनेट करेगा? नो मैम, वो नहीं खत्म हो नहीं जाएगा. करेगा. वेरी गुड. ओके, चलो नेक्स्ट. वंशिका अनम्यूट करो. यस वंशिका, मैम. हाँ, और नियति, ये दो बच्चे अनम्यूट करें अपने आप को. नियति जवाब दो पहले. Why do some plants feed on insects? Some plants feed on insects because the lack of nitrogen salts. These plants are called insectivorous plants. For example, Venus flytrap and pitcher plant. वंशिका का आंसर तुमने सुना? सॉरी वंशिका, तुमने आंसर सुना नियति का? Did you hear? ओहो, Yes. बोलो. नियति का आंसर आपको सुनाई दिया वंशिका? Yes, ma'am. अब आप मुझे आंसर बताएं. Why do some plants feed on some insects? Some plants feed on insects because they grow on the soil which lacks nitrogen salts. These plants feed on insects to fulfill their requirements of nitrogen. Okay, आपको मैंने जब नाइट्रोजन पढ़ाया है, कंपोजिशन ऑफ एयर, आपको ये बताया गया है, you have been told that nitrogen is there in ample in your atmosphere and plants need this for their growth. हमें प्रोटीन चाहिए for our growth, हमें प्रोटीन चाहिए for our body build-up चाहिए, वैसे ही plants को चाहिए नाइट्रोजन for their growth, which they do not get directly from the air. राजकुमार, कौन कन्वर्ट करता है इस नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए? Bacteria present under the soil. फिर से बोलो. मतलब इतना क्विक हो, आंसर दिया, फटाक से म्यूट कर लिया. राजकुमार बोलो. श्रेया बोलो. Yes, ma'am. What is responsible for this nitrogen to be converted into nitrates? Ma'am, the bacteria present in the soil may convert the nitrogen into nitrogen salt. Okay, now Anusha, are you there? Yes, Anusha, unmute yourself. Yes, ma'am. अनुषा, अगर कोई प्लांट लैक करता है नाइट्रोजन, कोई प्लांट ग्रो करता है नाइट्रोजन लैकिंग सॉइल में, तो इट कन्वर्ट्स, इट बिकम्स इंसेक्टिवोरस. एज पर गिव द आंसर फर्स्ट नियति एंड वंशिका, दोनों ने यही जवाब दिया कि द प्लांट्स सिंस दे ग्रो ऑन द सॉइल व्हिच लैक्स इन नाइट्रोजन, तो ये इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? Ma'am, because bacteria present, ma'am, because the plants could not take the their the nitrogen, so nitrogen. सिंपल आंसर, सिंपल. देखो देखो सुनो सुनो, हमारे पास प्रोटीन की कमी होती है या प्रोटीन लैक करते हैं, तो व्हाट डू वी टेक? वी टेक what? We take egg, we take meat, we take fish, and we take the milk. यानी animal products, है ना? Because they are rich in, they are having that protein in them. So plants also, since they lack, they go on the soil which lacks in nitrogen. वो ऐसे प्लांट सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं जहां पे लैकिंग ऑफ नाइट्रोजन है, यानी अमोनियम सॉल्ट नहीं है. तो ये क्या करेंगे? ये इंसेक्ट्स को मार के उस इंसेक्ट में बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, जो प्रोटीन है, उसको वो
कंज्यूम कर लेते हैं. So to replenish their nourishment, to complete their nourishment, they kill these insects and get the food from it. इनको extra nourishment की जरूरत पड़ती है. Okay, to fulfill their nourishment. Okay. अनुषा, कोई problem? No, ma'am. समझ में आया? Some plants feed on insects, some plants become insectivorous, or some plants feed on insects because they lack on the soil, which is they grow on the soil which lacks in nitrogen, and nitrogen is one of the thing which they need for what? For their growth. Aditya Raj Singh, unmute yourself. Very easy question I'm asking you. Name 2 plants that grow on that reproduce through stem cutting. Aditya Raj Singh, unmute karo. Aditya Raj Singh, unmute karo. Name 2 plants that grow on that reproduce through stem cutting. Very easy question. Rose and Bougainvillea. Huh? Rose and Bougainvillea. Rose and? Shreya, what is he telling? Can you get what he's telling? No, ma'am. कौन बताएगा? आदित्य राज सिंह क्या बोल रहा है? उसने अपने आप को म्यूट भी कर लिया. आशुतोष बोलो. आदित्य राज ने रोज के अलावा क्या नाम बताया? Ma'am, rose and Bougainvillea. Your sound is not clear. Rose तो आ रहा है. बाद में क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं आ रहा. Who will give this answer? 2 plants that grow, reproduce through stem cutting. Satyam Singh Ma'am, बोलो. can I? Satyam Singh बोलो. Yes, ma'am. Rose and? Rose and sugarcane. Okay. Banana also grow through stem cutting. Yes. Okay. Chalo. Satyam Singh, now you will answer another question. Okay, ma'am. 3 natural ways of seed dispersal. 3 natural ways of seed dispersal are dispersal by wind, cotton seed dispersal by water, lotus seed dispersal by insect, birds and rodents, grains. Okay, now I will be giving one option. फटाफट मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ. सारे बच्चे पहले म्यूट करती हूँ सबको. Then I am giving you the unmute option. जो जानेगा उसका आंसर मुझे फटाक से अनम्यूट करेगा अपने आप को. And I have given you option to unmute yourself. आप अनम्यूट कर सकते हैं. लेकिन एक साथ बहुत हल्ला नहीं होने चाहिए. मुझे ऑप्शन चाहिए आपसे. Okay? Yes, ma'am. लो पहले अनम्यूट कर लिया. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना अच्छा है नहीं? सब लोग तुरंत यस मैम बोल के अनम्यूट कर रहे हैं. नो, अनम्यूट क्वेश्चन सुनने के बाद करना है, पहले नहीं. I know that everybody is have got the permission to unmute themselves. Lotus seed dispersed mainly through Water. Water. Okay, next. Water. Next, the small baby plant coming out of the seed is known as Seedling. good seedling. Right. It is seedling. Next, Akarshan पहले unmute कर लिया, मार खाओगे. Next is the process by which plants make their own food is called Photosynthesis. okay. Okay. Ma'am, I मुझे know लगा the answer. कि आप थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन आप तो बच्चों से भी बच्चे, केजी क्लास के बच्चों की तरह कर रहे हैं. पहले से अनम्यूट कर लेते हैं और एक साथ बोलते हैं कौन पहले बोलेगा. अभी कंपटीशन था भूमि और उसमें आकर्षण में. भूमि ने पहले अनम्यूट कर लिया और फटाक से पहले जवाब दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शयान अब्दुल्ला. अब मैंने आपको ऑप्शन हटा दिया क्योंकि वो ऑप्शन आप लोगों ने मिस यूज किया. शयान, unmute karo. Yes, ma'am. You have to tell me the functions of the following parts of the seed. I will, what is the function of cotyledon? Ma'am, can you repeat the question? Tell me the functions of the following parts of the seed.
Function of cotyledon. Ma'am, cotyledon provides food for the baby plant. They store food for the baby plant. Dipesh Jha, what is the function of seed coat? शान अब्दुल्ला हमारे साथ म्यूटेड है, सुनेंगे उनके आंसर को. दीपेश. मैम नहीं आता. मुझे पता था नहीं आता is the very best answer you can give. शान अब्दुल्ला बोलो. Function of seed coat. Shan, you're unmuted. Shan Abdullah, unmute कर लिया अपने आप को. Okay, no problem. Shreya 5C, बोलो. श्रेया क्लास से चली गई है. वेरी गुड. कुछ बच्चों का यही हैबिट बहुत खराब. चलो. Then who will say this answer? Satyam बोलो. The thick outer covering of the seed will protect the baby plant. Protection. Micropyle. Micropyle. It allows water to enter inside the seed. Okay, very good. So this was all about lesson 2 revision. Tomorrow also we'll do the revision, but tomorrow ये quiz होगा. Only quiz. All the question answers, short questions. मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. Tomorrow we are running on the last minute. सारे बच्चे get yourself prepared for lesson 2. Small questions, long questions, सारा कुछ तैयार रखेंगे. कल हम quiz करेंगे, कल हम स्कूल से क्लास करेंगे. बोर्ड हमारा स्कोर बोर्ड हमारा रहेगा, and we will be giving the marking. तो lesson 2 complete revision चाहिए. Short, do you know keywords, everything. Is it okay with all of you? Cat, is it okay?